So first we are going to take, oops, I can't take my eyes off. Hi bees, I'm Chillbee and welcome to my beehive. So first of all, Merry Christmas to you in advance. I know आज 24 ही है लेकिन 25 को मैं वीडियो नहीं डालने वाली, so इस वजह से Merry Christmas in advance. I wish you guys all the success and happiness that you deserve. And today I'm going to share this makeup look with you all. ये मैंने Christmas के लिए बनाया है, so इसलिए इतना रेड हो रहा है. ये वाला मेकअप लुक आप किसी भी कलर के साथ कर सकते हो. So मैंने सारे शेड्स लिए हैं रेड वाले. अगर आपको सेम लुक करना है इन ग्रीन तो आप सारे शेड्स लोगे ग्रीन वाले, एंड विद ब्लू ऑल्सो, विद पर्पल ऑल्सो. You get the point, right? Also, Amazon पे चल रही है end of season sale, so don't forget to check that out. Also, if you're watching this pretty face for the very first time, so hi, I'm Dipanshi Jain aka Chillbee and I make videos on fashion, makeup, beauty, lifestyle, hauls, YouTube related stuff, vlogs and a lot more. And do consider subscribing to this channel Chillbee and also hit the like button and share this video with your friends and family. So now without wasting any more time, let's buzz into the video. Alright, so मैंने moisturizer लगा लिया है और मैंने थोड़ी सी strobe cream लगाई थी from MAC, and now I am just going to prime my face with Maybelline Fit Me Dewy Smooth Primer for normal to dry skin. It's my second time using this primer और मुझे ये ज़्यादा hydrating लगता है. मतलब ये blur वाला effect नहीं देता है इतना ज़्यादा, like जितना मुझे पसंद है. I always use silicone based primer and this is like a cream based primer. I don't like it that much but today I'll just work with it. Also मैंने यहाँ पे एक acne patch लगा रखा है तो मैं उसे हटाने नहीं वाली हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. I don't want it कि वो और ज़्यादा हो जाए, तो हम acne patch के ऊपर ही करने वाले हैं. I am using COS RX के acne patches. If anyone is interested, link is in the bio. This primer does smoothen out your skin, लेकिन बिल्कुल blur नहीं करता है, लेकिन काफी अच्छे से hydrate कर देता है, which is just amazing and I love that. और winters में तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि काफी अच्छे से आपकी स्किन को एक hydration मिल जाता है. Even if you skip moisturizer, which you should not, but अगर आपने कर लिया है तो ये वाला primer उसे cover up कर देगा. Now I'm taking L'Oreal Infallible 24-hour Fresh Wear Foundation, which is new oxygen technology वाला, and I am in the shade 230 Radiant Honey. So yeah, let's try this. तो ये मैं पहली बार यूज करने वाली हूँ. So yeah, this is the foundation. I don't know कि मेरा ही शेड हो. Oh, it's very runny. It's super duper runny. I mean, wow. Let's just apply it first and उसके बाद हम देखते हैं कि मेरा क्या रिव्यू होने वाला है. It's very runny, like dripping runny वाला runny है. Well, it might give full coverage, which I'm like, wow. अगर आपने मेरा चैनल पहले से देख रखा है, so you guys know I don't like using brushes to apply my foundation. I always use a beauty blender, but this time I just used a brush and I just love it. Like there are no strokes or whatsoever. बहुत ही ज़्यादा, like बहुत ही प्यारी फिनिश आई है. Look at the difference. मेरी eyes देखो, like dark circles. कहाँ है dark circles? It's amazing. This foundation is amazing and also it's like a nice match to my skin, so I'm happy about it. Acne scars कहाँ है? Dark circles कहाँ है? और ऐसा भी नहीं लग रहा कि आपने बहुत ज्यादा ओवर फाउंडेशन लगा रखा है, बिकॉज आई जस्ट यूज्ड अ पम्प और उसमें भी बचा हुआ है अभी थोड़ा सा, और मैं ब्रश से लगा रही हूँ. इट्स अमेजिंग, आई लव इट. ऑल्सो ये स्टार्ट ड्यूई होता है लेकिन जब ये सेटल डाउन हो जाता है तो ये मैट हो जाता है. लाइक दिस इज लाइक मैटिफाइड, बट ऐसा मतलब बहुत सूखे वाला मैटिफाइड नहीं है. इट लुक्स ओके बट दिस लुक्स ड्यूई, सो या जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट पॉइंट. इस फाउंडेशन के साथ मुझे कंसीलर की नीड नहीं लग रही है, बट स्टिल वी आर गोइंग फॉर द concealer next and I'm going to use Maybelline Fit Me concealer in the shade 25 medium. Now ये वाला शेड मुझे थोड़ा सा लाइट लगता है अपने स्किन टोन से, but it's okay if I want to brighten up my skin a little bit. तो डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं जो हाईलाइट करने होते हैं एरियाज, उसके लिए ये वाला शेड मुझे काफी अच्छा लगता है. एंड इसे ब्लेंड करने के लिए भी I am using concealer brush from Lashes which is F011. इसका फॉर्मुलेशन इतना ज्यादा प्यारा है. It blends super duper easily and इतना ज्यादा creamy फॉर्मुलेशन है. I just love this concealer. I am so happy with my base. Like it's looking so pretty. I just love it. So अब मैं लगाने वाली हूँ RENEE का cheek tint in the shade Pandora Pink और ये मैं बहुत ही थोड़ा सा लगाने वाली हूँ just on my cheeks and nowhere else, ताकि ये थोड़ा सा like पिंकी सा रहे एंड लॉन्ग लास्टिंग रहे. ये जब भी मैं ब्लश यूज करती हूँ इट जस्ट मेक्स माई ब्लश सुपर डुपर लॉन्ग लास्टिंग एंड आई लव दैट अबाउट इट. एंड द बेस्ट पार्ट इज आप इसे अपनी फिंगर्स से कर सकते हो. लाइक यू डोंट नीड एनी ब्रश और अ स्पंज. इट्स सुपर डुपर क्रीमी एंड सुपर
super duper nice. You guys know how much I love this one. मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं अपनी नाक पे भी लगा लिया. Now we are going to set our face with a compact powder from Colorbar. I am in the shade 002 Shell. I am using RENEE powder brush and just taking a little bit of that. मेरी skin अभी भी बहुत ज़्यादा dewy feel कर रही है and I just love that about this makeup look. Now I am using Sugar का face palette in the shade 02 Vivid Victory and just using the bronzer and blush shade from that. For blush I am using F014 brush, using F010 brush and using the highlighter to just highlight my cheekbones. Look at that. For eyebrows I am using Sugar का Arch Arrival Brow Definer in the shade 02 Taupe and it's a very nice, very precise brow pencil as you guys can see. It's super fine and it's super duper nice. And also brows मैं off camera करने वाली हूँ. If you want like a tutorial, I'll just leave the link in the I button. And also मैं अपनी सारी makeup videos का एक playlist बनाकर description box में डालने वाली हूँ. So don't forget to check that out. So मेरी eyebrows हो गई हैं and I just wanted to quickly spray this makeup fixer on top of my face. So I am using MAC Fix Plus. It's like the normal variant and also the mini variant because पैसा बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है. Alright you guys, so I just tried a little bit of something on my eyelids and I do think it's looking good. So I am using Makeup Revolution palette and also You Can Be Fantasy palette. I'll just mention all the links in the description box down below. So do check them out. So first we are going to take E009 brush from Cuffs and Lashes and dip it in Indulge, which is a very nice light color. बहुत ही ज़्यादा light brown है with a hint of mauve. So we are just going to set our eyelids and also the crease with this and then we are going to build it in our crease line. It's a very pretty and a very nice transition shade and I just love using this one. Next I'm going to take E005 and use it with Lavish. This is a very nice dark peach color, like not very dark but not so light. So हम इसे अपनी crease line में लगाने वाले हैं just to give the depth effect. और ये बिल्कुल Indulge जैसा ही shade है, just a bit darker and it's very soft and very creamy. I just love working with this palette. It's amazing. Now I'm taking this brush. It's a very fluffy but not so dense brush and I am dipping it in this shade right here. It's a very bright cherry red color and I am going to dip it in. और इसमें बहुत ज़्यादा kickback है pan में, but pan में ही होती है so I don't mind that. And I'm just going to place this color on my eyelids like very lightly because बहुत ज़्यादा kickback आ सकता है. So I'm just going to place it. You can also use a concealer as a base या फिर आप एक eyeshadow base भी लगा सकते हैं, but I am just going without anything. Now when you are happy with your placement, जो हमने सबसे पहले ब्रश लिया था E009 हम वो लेंगे without any कलर. तो हम सब कुछ हटा लेंगे and we are just going to blend everything. So मुझे आधा घंटा हो गया जब मैंने लास्ट क्लिप शूट करी थी. मैंने थोड़ा सा लाइक लिक्विड आई शैडो लगा लिया था and it just went down तब से ही and फिर मुझे ये पूरा साफ करनी पड़ी आँख और फिर दोबारा से मैंने अप्लाई करा. देन यहाँ पर रेड रेड हो गया था, फिर मैंने वो क्लीन करा. It was just a mess. So I am not thinking to apply a liner क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने लाइनर लगाया तो बस ये वीडियो कभी भी नहीं आ पाएगी. So yeah, I just wanna do mascara and lipstick now. And for the mascara, I have my new favorite. Like mascaras, मैं बहुत ज़्यादा try कर रही हूँ आजकल. मैं नए mascaras try कर रही हूँ. And today I'm gonna do L'Oreal का Voluminous Lash Paradise. It's a waterproof and hydrofuge formulation. I don't know what hydrofuge is, but yeah, it's waterproof. तो ये निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. But अगर आप micellar water use करते हो, येलो वाला जो आता है, तो ये आराम से निकल जाता है. So yeah, I'm just gonna coat 2 layers of this on my eyelashes and I'm good to go. Look at the difference. I know it's not that crazy, लेकिन सिर्फ मैंने एक ही कोट लगाया और फिर मैंने एक साफ वॉन्ड से इसे जस्ट क्लीन कर लिया ताकि थोड़ा सा नेचुरल लुक आए and not too heavy or like lumpy. And इसमें तो दिख ही नहीं रही eyelashes, but इसमें they are just looking nice. And now it's time for lipstick. So lipstick में I am thinking to go with MAC Ruby Woo. It's a very bright red lipstick and I think ये बहुत अच्छा जाएगा हमारी bold eyes के साथ. I don't want to do like a bold eye neutral lip or a neutral eye bold lip वाला look. I want it all bold. So yeah, let's just try this. अगर नहीं अच्छी लगी तो हम हटा के दूसरी लगा लेंगे. It's a perfect Christmas shade. It's so pretty. आप इसके साथ एक neutral brown eye look भी कर सकते हैं. It would look so fabulous. And इसके साथ भी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है.
It's so amazing. जितना मैंने सुना था उतना मैट तो नहीं लग रहा मुझे, लाइक उतना ड्राइंग नहीं लग रहा है. It's matte but it's a creamy matte formulation. I do think like that क्योंकि मैंने एक लिप मास्क भी लगा रखा था Laneige वाला, so maybe because of that, but it's non-sticky. It's amazing. I love this look. I love this look. Let's top it off with some lip gloss क्योंकि you can't go wrong with lip gloss, right? So I'm using RENEE का lip gloss in the shade Pink Pow Wow and just applying it on my lips. मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये makeup look. Let me just open my hair. Oh my god. I am completely in love with this makeup look and I guess ये makeup क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा. लाइक इफ यू आर वेयरिंग अ रेड ड्रेस ऑन न्यू ईयर्स, दिस विल जस्ट गो फ्लॉलेसली विद दैट ड्रेस. सो या विद दैट आई एंड दिस वीडियो राइट हियर. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आगे क्या क्या वीडियोस चाहिए. आई एम जस्ट थिंकिंग टू रीवैम्पिंग माय चैनल. तो मैं हॉल्स जो है वो थोड़े कम करने वाली हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज आस्क्ड मी कि मैं हॉल्स कम करूँ. तो हॉल्स कम होने वाले हैं और बाकी चैलेंज वीडियोज आने वाली हैं, मेकअप ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, यूट्यूब रिलेटेड वीडियो आने वाली है एंड Q&A वीडियो भी मैं बनाऊंगी आफ्टर लाइक जनवरी. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और क्या क्या वीडियोस चाहिए मेरे से एंड आई विल मेक दैट फॉर यू गाइज. ऑल्सो इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो देन यू नो व्हाट टू डू. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल Chillbee. I will be meeting you guys in an amazing video super soon. तब तक के लिए stay safe, stay home. I love you all so much. Bye bye.